Hi guys, welcome back once again. So guys, this time I saw the amazing opportunity by ISRO and this is a project work. So you will get a chance to work on a project with ISRO. It's for BTech, ME, MTech, PhD students, everyone, okay? So before I actually talk about the opportunity, I want to introduce myself, whomsoever new to my video. Guys, I'm Prakhar. I make contents on scholarship, internship, project works, and courses with certification. So everything which is beneficial for freshers, college students, or a person who is in the industry also and want to acquire new skills. Okay. So you can see recently I posted about this Thales amazing opportunity, guys. This is one of the best opportunity for hackathon. Okay, and this is a very easy hackathon. So it's up to 1.5 lakhs, and there's an opportunity to work with Thales. Then there's a Tata Steel internship. There's a bulk hiring. So this is one of the very best thing. Then there was Atlassian internship. This was Atlassian provides at least 85,000 to 1 lakh internship stipend. Then there was virtual internship by Tata. Then there was Google free certification. Then so a lot of say Amazon scholarship. They were giving free laptops. So SBI scholarship. So you can see right a lot of contents I post on a daily basis. So definitely you should see this thing. This is very beneficial for all the types of students. Okay. So guys, please consider subscribing to my channel. Please share this channel with your friends, family groups, and everyone, cousins, right? So that most of the people should take a benefit from this, okay? So now let's start talking about this. So guys, this opportunity is from ISRO, India Space Endeavors. Okay, you can see here. So they have the project for BTech, BSc diploma. Project one there is ME, MTech, okay, and then there's PhD, okay. So let's open for BTech and let's talk in detail, okay. So this is the document which is being rolled out, okay. So see, there are few criteria mentioned, few eligibility criteria. So applicant should be citizen of India, that's okay. Project work shall be carried out either individually or as a group of maximum 4 students. So guys, you can either work in individual as an individual or you can make a group of 4 people, okay. Project works is offered to students pursuing BTech, BSc Physics, Chemistry, and Diploma Electronics, Mechanical, and Computer Science. Okay, the minimum and maximum duration of project is follows, right? So minimum duration will be 45 days, and maximum will be 90 days for BTech. For BSc, minimum is 45 days, maximum is 60 days, right? And you all people can choose among these 8 slots. Okay, they have given the 8 slots. Whatever slot suits you, you can choose the particular slots in order to work for the internship. Okay, now see, for BTech you should at least completed 6 semester. आपको 6 semester तक complete कर लेना चाहिए, that means the third year. For BSc also you should be completed till 4th semester, and for diploma final students you should be there. Okay, now you should have a detailed biodata must be attached separately. Okay, that means this is a CV resume, right? So a detailed biodata, that is a CV and resume, that should talk about your experience, interest, and everything, right? That you have to attach along with the application form. So application form should be duly filled by students and HOD, principal of the college students in all respects. Okay. So guys, आपको भरना है, उसमें HOD या principal का sign होगा, तो वो आपको करवाना है अपने college के, right? So the application form, the completed application form should be received in HRDD VSC at least 45 days prior to the commencement of the project. So make sure आप यहाँ से कोई भी date choose कर रहे हो, उसके 45 days पहले आपको इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। सो इसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस हर चीज स्टाइपेंड नहीं होता, राइट? यहाँ पे आपको इंडस्ट्री लीडर्स, इसरो के लीडर्स के साथ एक प्रोजेक्ट में काम करने को मिलेगा, जिसका सर्टिफिकेशन और जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, दैट्स जस्ट मोर देन आप सोच नहीं सकते, दैट कैन ऐड सो मच वैल्यू इन योर रिज्यूमे, राइट? So the students shall be permitted to carry out project work only within classified areas of ISRO. The number of students vary करेंगे, that's fine, okay. Now the application may be sent to the post. So guys, आपको या तो यहाँ पे पोस्ट करना है, या तो either I can send a scanned copy to this mail also. You can send a scanned copy to this mail, or either you can send a post to this address, correct? So guys, this is the complete application form. यहाँ पे देखो ये complete application form लगा हुआ है, तो ये आपको भरना है। मेक श्योर यहाँ पे देखो कॉलेज सील लग रही है, HOD का साइन भी होगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से करवाना है गाइस। ये फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आप इसको भरवा कर एंड साथ में अपनी डिटेल CV लगा के आपको इधर इस मेल में आप लोग मेल कर दीजिए। स्कैन कॉपी भेजना है गाइस, मतलब कि आपको प्रिंट आउट लेके मतलब उसमें रियली में अच्छे सिग्नेचर करवा के देन आपको स्कैन करना है, राइट? एंड इधर आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए इस एड्रेस में, राइट? सो एनी ऑफ दिस थिंग यू कैन डू एंड मेक श्योर कि आप 45 डेज पहले करो, वॉट एवर डेट यू आर
selecting here, right? The same goes for this. So this is for BTech, right? The same goes for ME MTech also. So ME MTech में देखिए अलग 120 days minimum है, 1 year maximum है। MSc का 120 days minimum है, 180 days maximum है। एंड इसमें तीन ही स्लॉट्स है, तो आपको यहाँ पे तीन स्लॉट्स कुछ भी चूज करना है, करेक्ट। सो ME MTech में कंप्लीटेड फर्स्ट सेमेस्टर, MSc में कंप्लीटेड फर्स्ट सेमेस्टर, इंटीग्रेटेड वाली कोर्स में आपको 7 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे भी यहीं पे आपको ये भेजना है इस ईमेल आईडी में, या तो सी यहाँ पे मेंशन है यार, इधर आपको यहाँ पोस्ट करना है, इधर सेम ईमेल आईडी में आपको भेजना है, राइट। अगेन यहाँ पे भी फॉर्म एप्लीकेशन असाइंड है, फॉर्म अटैच, राइट। सो आपको ये फॉर्म का लेकर आपको अपने बायोडेटा अपने सीवी के साथ इसमें स्कैन करके भेज देना है, या तो आप पोस्ट भी कर सकते हो वहाँ पे, राइट। सिमिलरली ये है PhD एकेडमिक वालों के लिए, द सेम थिंग फॉर PhD एकेडमिक। सो गाइस मैं ये वाली डॉक्यूमेंट, ये वाली पोर्टल की लिंक दे दूंगा। इस पोर्टल में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इधर जो वट एवर आप सेट हो रहे हो वहां पे करके डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म खुल जाएगा, राइट। सो गाइस ये बहुत ऑफ द बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा सबको इसमें पार्ट लेने का। एंड इसको शेयर करो क्योंकि ये बहुत अच्छी है, और इसमें ग्रुप में पार्टिसिपेट करो ताकि आप लोग को ज्यादा एडवांटेज हो। देखो ये सब चीज इंडिविजुअल भी आप कर सकते हो इफ यू फील सो मच कॉन्फिडेंट, नहीं तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप में जाके करो, राइट। गाइस इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप इसमें कुछ भी इशू हो आप मुझको इधर कमेंट कर सकते हो इसमें, और इधर आप मेरे को क्या कहते हैं इंस्टाग्राम में आप मेरे से जुड़ सकते हो, राइट। और मेरे को इंस्टाग्राम में भी आप मुझसे बातें कर सकते हो, राइट। सो गाइस अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगे प्लीज को सब्सक्राइब करो, लाइक करना वीडियो को ताकि इट शुड रीच टू मैक्सिमम ऑडियंस। शेयर करो ताकि गाइस सब बहुत लोग इसका बेनिफिट उठा पाए, राइट। गाइस मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, डेली न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी ला रहा हूँ। सो आई वांट यू पीपल टू एक्चुअली डू, थोड़ा सा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ये मेरे को भी मोटिवेट करेगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।